Welcome students. So we have brought the Hindu vocabulary drill for you, and today we are discussing synonyms, antonyms, idiom and phrases, one word substitution, and also we are discussing one question paper SSC CGL. Okay students, सबसे पहले हम we are taking the extract from the front page news from the Hindu dated 27 July. So it is an extract from that news. So out of that we have taken 7 words, and for these 7 words we will discuss their meaning in English, meaning in Hindi, and their synonyms or antonyms. So celebrating, we read it like this: celebrating its reputation as cradle of the revolution. तो यहाँ पे एक क्रेडल वर्ड आया है, तो मैं इसको जनरली फर्स्ट रीडिंग में समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, इट इज जननी, क्रेडल, जननी. सो सेलिब्रेटिंग इट्स रेपुटेशन एज ए क्रेडल ऑफ रेवोल्यूशन. तो क्रांति की जननी की एक रेपुटेशन है, किसकी? पेरिस की है. पेरिस किक्ड ऑफ, शुरू करना, स्टार्ट करना. तो पेरिस ने क्या शुरू किया? इट्स फर्स्ट समर ओलंपिक्स इन ए सेंचुरी ऑन फ्राइडे विद रूल ब्रेकिंग ओपनिंग. नियम तोड़ने वाली ओपनिंग, मतलब बहुत बढ़िया ओपनिंग, रूल ब्रेकिंग ओपनिंग सेरेमनी. स्टडेड मतलब जड़ित, तो जिसमें हिंदी में कहेंगे जड़ित, जिसमें जैसे आप अंगूठी में नग जड़ा होता है, तो इसी तरह से ये सेरेमनी स्टडेड विद स्टार्स एंड फैंटेसी, कल्पनाओं के साथ और स्टार्स के साथ. शो केसिंग द सिटीज रेजिलियंस, रेजिलियंस दृढ़ता, दृढ़ता, तो दृढ़ता. एज अथॉरिटीज डील विद द सस्पेक्टेड एक्ट्स ऑफ सैबोटेज, सैबोटेज तोड़फोड़, तोड़फोड़ के घटनाएं हुई हैं, कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं, तो उसमें जो वहां के अथॉरिटीज ने बड़ी दृढ़ता शो किया, सिटी की दृढ़ता को शो किया है. तो तोड़फोड़ की घटनाएं क्या है? दैट टारगेटेड कंट्रीज हाई स्पीड रेल नेटवर्क, जो कंट्री के हाई स्पीड नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की. वाइडस्प्रेड ट्रेवल डिसरप्शन ट्रिगर्ड बाय व्हाट फ्रेंच ऑफिशियल्स सेड. तो ये जो डिस्ट्रप्शंस आई हैं वर कोऑर्डिनेटेड आर्सन. कोऑर्डिनेटेड आर्सन मतलब जिसको आगजनी कहेंगे हम, आर्सन आगजनी की घटनाएं ऑन हाई स्पीड रेल लाइन्स एंड रेन्स इन पेरिस had dampened the mood ahead of the ceremony. तो बिना इन वर्ड्स के मीनिंग जाने, without learning about the meanings of these words, it is quite difficult to understand even uh, these few 2-3 lines. It is quite difficult. So we are starting with first word, cradle. Cradle means, I have written that janani, but it is a small bed for a baby. तो पालना जिसको कहते हैं हिंदी में, ऑफन डिजाइन टू रॉक, तो पालने में बच्चे को पाला जाता है. तो जननी जन्म देने वाली, पालना भी उसी से रिलेटेड हो गया. सिनोनिम इज बेसिनेट, इसको याद रखें, बेसिनेट पालना ही कहेंगे इसको हम. और इसका जो एंटोनिम है दैट इज ग्रेव. ग्रेव का मतलब कब्र, तो यहाँ जन्म से रिलेट करेंगे हम इसको, और ग्रेव को कब्र से, मृत्यु से रिलेट करेंगे. तो इस तरह से क्रेडल, क्रेडल फर्स्ट वर्ड क्रेडल, इसको आप बार बार बोलोगे तो ये समझ में आएगा और हमें रिटेन रहेगा, इट विल रिटेन. Second is kicked off. Kicked off means in Hindi we will say it is शुरू करना, ये शुरू करना है. So it English started or initiated something. So kicked off. So its synonym can be initiated, started, and one more
commenced. And antonym for this it is concluded. Concluded means to finish, to give a finish, अंत करना, conclude करना किसी को set. And after that it is rule breaking. It is a phrase. So meaning in English, the act of not adhering to rules or regulation. So literally it means that something in which rules and regulations are not adhered. नियम तोड़े गए हैं, नियम तोड़ना. But in rule breaking as a phrase we can say it is beyond expectations. Beyond expectations. So synonym for it is, in literally it is violation, and antonym is compliance. Compliance, नियमों को पालन करना, compliance. Compliance. Studded. So studded in English means decorated or covered. जड़ित जिसको कहते हैं अंगूठी में नग जड़ना. So decorated or covered with studs of small, usually metal projections. So it can also be called as adorned. Adorned. और अगर नग नहीं जड़ा हुआ, it's that is antonym, it is plain. Plain. Resilience. Resilience is the capacity to recover quickly from difficulties. So as mentioned in that extract, so something bad had happened, but the city and its authority showed resilience. Dridhta showed its capacity to recover quickly from difficulties. So that is dridhta. And other meaning or synonym is endurance, and antonym it is fragility, kamjori, fragility. Sabotage, it is तोड़फोड़. Deliberate destruction. Deliberate means जानबूझ के की हुई. Destruction, तबाही. Damage. Obstruction, especially for political or military advantage. तो ये जो है that is जानबूझ के की हुई destruction आ गई. और इस the another word for it is vandalism. Vandalism. Antonym for it is support. It is support. Arson. So it has meaning in English. It's the criminal act of deliberately setting fire to property. आगजनी करना. तो दंगाई लोग जो बिल्डिंग्स वगैरह, प्रॉपर्टीज, कार्स को सड़कों पे खड़ी हुई हैं जो आग लगा देते हैं, that is arson. So in synonym it is same meaning, it is incendiarism. And antonym it is fire prevention. Fire prevention, incendiarism. So these are the 7 words which we have to be take care, क्योंकि इन्हीं के इसी तरह के जो कुछ मीनिंग्स, कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं. अब we are discussing now SSC CGL 14 August 2023, not 4, shift third exam. So first question it is regarding one word substitute. A person who hates and avoids other people. जो दूसरे लोगों को मिलना नहीं चाहता, नफरत करता है, वैसा आदमी. Masochist, pervert, hermit, misanthrope. So masochist it is who derives pleasure from their own pain or humiliation. जो अपने आप को दुख देके खुशी महसूस करता हो, that is masochist. तो ये एक साइकिक केस है. It is a psychic case. The someone who derives pleasure from their own pain and humiliation. Second is pervert. A person whose sexual behavior is regarded as abnormal
and unacceptable, that is called pervert. Hermit साधु को बोला जाता है. Someone who lives in seclusion, जो एकांत, seclusion means एकांत में रहने वाला, एकांत में रहने वाला, often for a religious reason. किसके लिए? किसी religious तप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, that is called hermit, साधु, तपस्वी. And misanthrope, mis means to hate, anthrop means humanity. A person who hates or distrusts humankind, it is misanthrope. So misanthrope, now we say a person who hates and avoids other people. So that means it is misanthrope. So these words are, we cannot say are the easier one. These are the of mediocre level difficulty. So as we have discussed in our news extract, that these words were not easier one too. So in similar way, we have to understand and learn the words from the Hindu newspaper. Question 2, antonym. Now it is the gradual, the word dash, gradual, curtail in the expenditures made them tensed. Curtail. तो कांट छांट करना कह सकते हो आप इसको. So there is first option, indent, innate, increase, insinuate, insinuate. So indent, first indent, it is a space left at the beginning of a line of text. Whenever typed in, we type in MS Word, so there we use that word indent, the space left at the beginning. Innate, innate is natural, जो नेचुरल ही किसी में कोई एट्रीब्यूट है, दैट इज innate attribute. Increase means to large, to become larger and greater, that is increase. Insinuate, to suggest or hint slyly. New word for you, मक्कारी, मक्कारी. सो धोखेबाजी सजेस्ट करनी. इनसिनुएट, सिन से आप ले लो सिनुएट. नाउ हियर curtail means to reduce or cut down. So when when the when we say that we have to cut down our expenses, we will say we have to curtail our expenses. So now we need an antonym opposite of curtail, so that is certainly increase. Synonym, third question, synonym. Select the most appropriate synonym of the word insidious. Insidious. So first option, protected, secure, safe, and harmful. So now what is insidious? If we know the meaning of this word, only then we can have the right option. So insidious means proceeding in gradual, आराम से प्रोसीड करना, चलना, आगे बढ़ना, सबटल वे, सूक्ष्म रूप में, बट विद हार्मफुल इफेक्ट्स, पर उसका धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे जहर बढ़ता है, तो बढ़ तो धीरे धीरे रहा, बट इट हैज harmful effect. So we need a word that is similar in meaning, like that. Protected, first word is protected. Protected means kept safe from harm or injury. तो इंजरी से बचना, हार्मफुल से, तो ये तो नहीं बनता हमारा. सिक्योर, फ्री फ्रॉम डेंजर एंड थ्रेट, safe, not in danger, so harmful, causing, likely to cause harm. So insidious means harmful, so answer is harmful. Antonyms. So the thief was caught with a spurious Picasso painting.
इसको स्पूरियस, नाउ अगेन ए न्यू वर्ड, इसको हम ये कह सकते हैं नकली, जैसे जाली डिग्री, नकली डिग्री बना लेते हैं, स्पूरियस जाली, फेक. Now here we have to find out opposite it. Now see here, fake, again it is same thing, it is synonym. Stolen, चोरी की हुई. Splendid, बहुत बढ़िया. Authentic, असली. तो spurious, uh, with spurious painting, so here it should be underlined. So it is authentic. Spurious means not being what it purports to be, false or fake. So antonym it is authentic. असली, जाली का, नकली का उल्ट असली आ जाएगा. Then one word substitute. A place where coins, medals, or tokens are made. जहाँ पे सिक्के बनते हैं, मेडल्स बनते हैं, टोकन्स बनाए जाते हैं. सो देर आर फोर वर्ड्स. मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री होता है मठ. मठ में तो नहीं बनाए जाते, वहां साधु लोग रहते हैं. बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स लिव. देन देर इज ए वन वर्ड, हैंगर. हैंगर इज ए वेरी लार्ज बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर प्लेस्ड. तो एयरक्राफ्ट का गैरेज बोल सकते हो, गैरेज फॉर एयरक्राफ्ट्स. देन हच फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए छोटा सा घर बनाया जाता है, दैट इज हच. मिंट, मिंट इज ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, सो आंसर इज मिंट. तो इसका आंसर मिंट है. इडियम मीनिंग, टू बेल द कैट. So bell the cat means to face the risk simply. Okay. So literally we cannot say that it has the same meaning, but we have to find out what should be its hidden meaning. To bell the cat. So for a mouse, if somebody says to a mouse that you have to bell the cat, that means the mouse is being persuaded for facing a risk. To feed pets, not play kids, not love cats, not face risk. One again, idiom. Idiom completions. The police have not yet been able to solve the case. It seems to be. In nutshell, nutshell means in brief, so it should not be there. Turning over a new leaf, नया कोई पत्ता खुलना. Making a fresh start, it is not like that. In pink, it is in good health, not like that. A hard nut to a hard nut to crack, a difficult problem to solve. So the police have not yet been able to solve the case. पुलिस अभी तक इस केस को सॉल्व करने में सफल नहीं हुई है. It seems to be, ये लगता है, hard nut to crack, की difficult problem to solve. Israel has been a staunch ally of the United States. So here, what is staunch? Resolute, careless, confused, unsteady. So explanation. Staunch means very loyal and committed. So we can say Israel has been a very loyal and committed friend of, ally means friend of United States. Resolute means having resolution लेते हैं ना, resolution, determined or admirably purposeful. Careless means not giving sufficient attention. Confused means unable to understand. Unsteady means not firmly fixed or wavering. So one is committed and opposite of that is wavering. कभी मित्र बन गया, कभी नहीं. So that is like that, unsteady. Answer is unsteady. Synonyms. Select the most appropriate synonym of the given word abound. Again, if we know the meaning of abound, only then we can have the correct option. Abound means plentiful.
it means plenty, बहुत ज़्यादा तादाद में. So we need a word with similar meaning. When we say increase, it is to become larger, flourish, prosperous होना, to grow or develop in a healthy way, succeed, सफल होना, to achieve the desired aim, adequate, enough, adequate काफी मात्रा में, sufficient, enough. So we can say that for abound the synonym is flourish. Question number 10, one word substitution. A person who abandons, abundance means छोड़ देना, religion, जो religion को छोड़ देता है. First option is egoist. Egoist is a person who is excessively absorbed in themselves, जो अपने ही अंदर ज्यादा रहता, घमंडी किस्म का ईगोइस्ट, जो अपनी ही बातें करता, अपने के बारे में सोचता है. Priest. Priest is a person who performs religious ceremonies. पुजारी, मंदिर का पुजारी, चर्च का कह सकते हो, किसी भी धर्म स्थान का पुजारी. Atheist. A person who disbelieves in the existence of God. जो भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता, that is atheist. And apostate. Apostate who renounces, छोड़ दिया, a religious और पॉलिटिकल बिलीफ, जिसने कुछ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स को छोड़ दिया है, दैट इज अपोस्टेट. सो दिस इज अपोस्टेट, आंसर इज अपोस्टेट. सो स्टूडेंट्स, हमने ये कर लिया है नाउ लास्ट में. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल and join the telegram link available in description. If you want this PDF, that is available in that telegram link. And if you like this video, do the like, share or comment. So okay, thank you students. हमारे साथ बने रहें, आपको आगे भी इसमें हम और नए वर्ड्स के साथ जोड़ेंगे. Okay, thank you students.